So my question was this, like I was getting a async, I was invoking an async function that is fetching the data from a different URL and to my web application, right, in JS. So uh, here I have created async function and I have called this function. Then I thought that I would get the uh, data into this variable, okay, but I was getting undefined and this was shown like I was in a dilemma that what is happening. So the happens is like this, that async function execute after, like it works simultaneously though, but it invokes after, or like it get assigned, or whatever things going to happen is after the synchronous code will be done, right? So uh, this was going on, let was going on, okay. And the same time like then the synchronous function was going on, and with this call, with this fetch function, right, and the simultaneously it was running, okay. The call stack was uh, working at the time, and like then it get filled by get, okay. Then the get was not having any information, like assigned, not declared. Then it shows undefined, okay. Then after that, what happened, this fetch function is going is executed. Then it filled with this, okay, to avoid, or like we can easily neglect the situation when we use add event listener to any button. Then we can easily fetch the data. That would work on a different scenario, because when we are fetching data with the button, it already does all the synchronous and asynchronous code executed, and the add image listener is a different matter. Whenever we click, we get the data, so it's upon us. So uh, the working of JavaScript is like this, that first is it execute the synchronous data, synchronous code, and then asynchronous functions are like asynchronous code, okay. So it was like Claude was saying this thing only, that the first thing is get is declared, okay, but not initialize, okay. Then the fetch is calling and start running, okay. While fetch is waiting for fetch response, JavaScript continue executing, okay. The outside code console.log, okay, it was running, and the console fourth line run before the fetch completes, okay. Later than the fetch completed, get it the value, okay. Then after that we'll get it, okay. The first solution would be let get, and we would use fetch dot then, like I think just after that, just after the calling, like from here, okay. We can use dot then, and then we can do whatever we want, because it will become asynchronous, right. Then what we can do is I think this is the simplest one, I guess. Whenever we are doing something special with the data, playing with the data, okay. uh, and the thing is, let get async function initial await fetching data. This can be also like it is it's on async function, right, and it is little bit
वाइडर कोड। सो इसमें क्या करना है कि एसिंग फंक्शन है, ठीक है, और जो ऊपर वेरिएबल हमने दे रखा है और बीच में वो फंक्शन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर अवेट लगा के फेच को कॉल किया, फेच डाटा को, उस फंक्शन जो फेच कर रहा है यूआरएल के हिसाब से। तो जैसे ही फेच करता है तो एसिंग डाटा है तो फेच होते के साथ में ही वो भी वर्क करेगा, और वो गेट करके इसमें सेंड कर देगा। उसके बाद ये सेकंड फंक्शन है ना, तो ये सेकंड फंक्शन इन्वोक होगा उसके बाद में। पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये कॉल हुआ है, और उसके बाद ये वाला वर्क करेगा, ठीक है, ये वाला वर्क करेगा। तो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी ये आएगा ना, क्योंकि ये दोनों एसिंग एसिंग फंक्शन है तो सीरियल वाइज वर्क करते हैं, है ना। थर्ड सॉल्यूशन, एसिंग फंक्शन फेच हो गया, लेट रिस्पॉन्स ये हो गया, ठीक है, लेट रिस्पॉन्स रिटर्न, इसमें रिटर्न करा देते हैं। और रिटर्न कराने के बाद क्या करेंगे, डॉट देन, और फिर उसके बाद डाटा को कंसोल वैसे करा देंगे, ओके। तो मैंने फिर उसके बाद पूछा कि भाई डॉट देन को, डाटा को फिर ग्लोबल वेरिएबल में कैसे लिखते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का लिखने का कुछ तरीका ऐसे है कि विंडो माई डॉट ग्लोबल की कर सकते हैं हम, ये एक डायरेक्ट मेथड है कि असाइन कर देगा उसको विंडोज़ के ग्लोबल डाटा में, ठीक है, देन वी कैन एक्सेस। और इसका क्या कर सकते हैं, और लेट और वेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने दिया है एक तरीके से कि कैसे स्पेसिफिक लेट से ग्लोबल वेरिएबल में हम कुछ देते हैं। तो ये रहा पूरा एसिंग फंक्शन, ये मैंने ये इसमें है, ठीक है, और ट्राई एंड कैच मेथड इसके अंदर है। और जो इसमें जो डाटा है, इसमें डाटा है, ये कब आएगा, ये आएगा सारे सिंक्रोनस कोड के बाद, ठीक है। लेकिन हमें तो बाद ही आएगा ना, तो अभी तो कोई भी सिंक्रोनस कोड लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो इनने क्या किया, ए सिंक्रोनस कोड लगा दिया, ठीक है, और उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दिया इधर ही, कि भाई तुम इधर आके कॉल हो जाओ। और फिर उसके बाद इस ग्लोबल एपीआई से जो भी कुछ करना है वो सब किया, और इसको भी कॉल कर दिया, ठीक है, साथ ही साथ में। मतलब सबसे पहले तो ये कॉल होगा ना, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं वर्किंग में, बाकी सारे तो असाइन करने वाले हैं ना। ये सबसे पहले कॉल होगा, इस कॉल के अंदर फिर ये कॉल होगा, फिर उसके बाद इस पर वो जो वैल्यू चढ़ जाएगी उसके ऊपर, तब इसके बाद ये कंसोल हो जाएगा वो वैल्यू, ऐसा है, ठीक है। और ये कुछ specifications and that we should consider while coding like this. ये वाला तो सर से बाहर जाएगा मेरे, so let's stop it.